Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS इंडियन पॉलिटी की 2000 MCQ की सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ. This is going to be test number 56. Now we are not wasting any time on this template. This template has been common across all the videos that you would have already seen. We are directly jumping to the first question of the day. 1100 question around we already have completed of committed 2000 questions. So more than half of what we had committed so far we already have completed. Now the first question goes like this. Consider the following statement about Constituent Assembly. So this is a question from Making of Indian Constitution. It had no representation from princely states. No, it's wrong. It had representation. It was just that the princely state were earlier hesitant in joining this Constituent Assembly, but later on they did join. The assembly was not elected on the basis of universal adult franchise. So that is correct statement. The members of Constituent Assembly, they were indirectly elected, and that was of course not by the universal adult franchise. So that is a correct statement. Muslim and Sikhs received special representation as minorities in the constitution. So that is also a correct statement. Now we have to see कि directive statement क्या है. Directive statement is asking for the correct statement, and hence second and third statement, because it is correct, so B is going to be the right answer. Yes, B is the right answer. Which of the following statement is incorrect? Now it is asking for incorrect statement. First, India is a destructible union of इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट. सो पहला ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है. अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो लक्ष्मीकांत का, तो यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ, रादर आर्टिकल 1 में ये तो मेंशन नहीं है, बट आर्टिकल 1 का डेरिवेशन ही है कि इंडिया इज अ इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन. सो ये वर्ड जो है वो इंटरचेंज हो गए हैं. सिंस इट हैज़ आस्क्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो ए डायरेक्टली. एंड इन सच स्टेटमेंट, सी इन मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स और इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई डू सजेस्ट यू कि भाई आपको पहले स्टेटमेंट में अगर आंसर मिल भी जाता है, स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि बाकी के 3 स्टेटमेंट भी पढ़ें. बट ये इतना डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इतना डायरेक्ट लाइन है, जिसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बाकी 3 स्टेटमेंट्स पढ़ने की जहमत ना उठाएं. और अगर इनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस में भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, तो हो सकता है आपको दूसरे अटेम्प्ट के लिए जाना पड़े. ये बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन की तरह ये लाइन्स है. नाउ आई एम नॉट वेस्टिंग अगेन टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, नॉट फर्दर टाइम. अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, राइट टू प्राइवेसी is an intrinsic part of. So of course right to life का ये part है, that is article 21. With reference to preamble as enshrined into Indian Constitution, consider the following statement. 2 statement regarding preamble has been given and directive statement is correct. The preamble has seen 3 separate amendment. अरे ये पहले ही आपका गलत हो गया. It has not. preamble अभी तक 42nd constitutional amendment सिर्फ एक बार हुआ है, जिसमें 3 words had been added, right? So make sure 3 amendments नहीं, 3 word had been added. So first statement becomes incorrect. It is a part of constitution and can be amended subject to the condition that it does not harm the basic structure. So that is a correct statement, right? So correct has been asked, so 2 only is the correct, and hence B is going to be the right statement, right answer. Which of the following rights are implicit under right to freedom of speech and expression? Article 19 के अंदर जो implicit rights है freedom of speech and expression, उसके बारे में. Do you have freedom of silence under article 19? Of course you do have freedom of silence. Right to demonstrate and strike, do you have? No, you do not have right to demonstrate and strike under right to freedom of speech and expression. So अगर 2 को eliminate कर दे, let us see if we can reach out to answer after elimination, after applying this elimination technique. B can't be answer, C can't be answer, right? So 1 could be the answer and D. So 50% of the option, there is 2 option has been eliminated. So 1 3 is common in this as well, 1 3 is common in this as well. So only 4th statement remains to be seen. 3rd statement you need not to read, because answer जो होगा either A होगा या D होगा, और A D में 1 3 तो common है ही. So 4th statement, right to know about government activities. So of course you do have right to know about government activities, and that's why right to information का जो डिडक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो इसी आर्टिकल के अंदर किया है, आर्टिकल 19 के अंदर ही किया है. सो ऑफ कोर्स डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर. 1 3 4 इज आर द राइट प्रोविजंस. विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट enshrined into the Indian Constitution, consider the following statement. Article 16 provides for additional grounds on which discrimination cannot take place as compared to Article 15, namely descent, place of birth and residence. So that is the correct statement. Article 15 में कौन कौन से grounds पे restriction जो है वो है
सो RRCSP, राइट। जबकि 2 एडिशनल ग्राउंड आर्टिकल 16 में आप देखोगे DR, डॉक्टर RR, ये आपके वो है RRCSP आर्टिकल 16 में DR, date of descent and residence are 2 additional condition under article 16. The term backward classes find mention in both article 15 and 16, so that is also correct. Article 15 talks of special provision for the women and children, but not article, so that is also correct. Correct has been asked, and hence all of the above statements are correct. B is the answer. With reference to the procedure for the amendment of the constitution as laid down in the article 368, consider the following statements. Okay, the provision of constitution which can be amended by a simple majority are outside the scope of article 36, so that is a correct statement. अगर स्टेट की बाउंड्री चेंज करते हो, स्टेट का नेम चेंज करते हो, स्टेट, सो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कंसीडर कर सकते हो, बट देन दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 36. आर्टिकल 368 डज नॉट कंसीडर इज it as a constitutional amendment. So first statement is correct. The constitution amendment bill does not require prior permission of the president, so that is also a correct statement. So correct has been asked, so both 1 and 2 are the correct statement, hence C is the answer. With reference to the Indian constitution, consider the following statements. 2 statement has been given and we have to figure out कि correct statement कौन सा है. Indian constitution has no provision with respect to cows, so that is a wrong statement. You have this article 48 into DPSP part 4 of Indian constitution that talks about banning of slaughter of cows specifically and other milch animals, right? So first statement becomes incorrect. Free legal aid to poor is a justiciable right under the Indian constitution, so that is also correct. Now here confusion might be created because पहले free legal aid की जो बात है वो आपके DPSP में की गई थी, बाद में later on through various Supreme Court judgment इसको आर्टिकल 21 that is right to life का पार्ट भी बना दिया गया कि अगर कोई पर्सन है जो कि पे नहीं कर सकता, राइट, और वो अगर जेल में है, अगर तो उसको स्टेट की ये ड्यूटी हो जाती है कि स्टेट उसे जो है वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाए. सो अंडर, बट इनिशियली दिस वाज पार्ट ऑफ योर DPSP, राइट. सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सो सेकंड ओनली इज गोइंग टू बी करेक्ट स्टेटमेंट. बी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग एबव इज आर क्लासिफाइड अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन. नाउ ये आपको सही लग सकता है, सीमिंगली सही लग सकता है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन जो है ये राइट टू इक्वालिटी में बात की गई है कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन नोबडी, नो पर्सन और नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडिया, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15, राइट. देन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ द रिलीजन, सो येस दिस इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25. प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, नाउ also this is not part of right to freedom of religion. Freedom of religion, if you remember, you have article 25, 26, 27 and 28, while this protection of culture of minority has been discussed into cultural and educational right. Do you remember the various classification of fundamental right we had done when we were discussing this fundamental rights? So this is part of cultural and educational right, and specifically speaking article 29. So this is also not part of freedom of religion. So far only second statement is part of freedom. Freedom to manage religious institution and affair, so this is article 26, right. So 2 and 4 is going to be the part of freedom of religion and part of this answer. 2 and 4 is in C, so C is the right answer. The form of government in India is termed as parliamentary government, parliamentary form of government due to. So actually यहाँ features बताने हैं, यहाँ 3 features दिए गए हैं और हमें बताना है parliamentary form of government के, Indian parliamentary form of government के features. So dissolution of lower house, is it a feature of parliamentary form of government? Of course. Presence of both nominal and real executive, yes, this is also feature. Collective responsibility of the executive to the legislature, so that is also correct. So correct statement हमें बताना है, and that is going to be D is the right answer. Consider the following statement about election to the legislative council, that is the upper house in the state. You do have 6 states where you do have legislative councils,
ठीक है, तो उनके बारे में ऑल मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. यू डू हैव certain category of people or a category of MLCs who are directly elected as well by class of student who have certain class of degree and class of teachers. So वहाँ direct election होता है. Indirect election, so यहाँ लिखा हुआ all members, not all members. Proportional representation by means of single transferable vote is followed, so that is correct. Members of Panchayat Samiti and graduates also participate into the election, so that is correct, right? You do have Panchayat Samiti, district Jila Parishad, and then at the in the city level, similarly municipal members also participating, so third is also correct. Governor nominates 2 members. No, governor used to nominate earlier into the legislative assembly 2 members belonging from what you call this Anglo-Indian community. ठीक है, यहाँ जो है 1/6 जो मेंबर्स हैं दोज आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर. ठीक है, नॉट दिस नंबर इज नॉट फिक्स्ड, राइट. और 1/6 भी नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है आपके वो है रिमेनिंग. ठीक है, कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल विल बी इलेक्टेड बाय स्टूडेंट, कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल विल बी मेंबर्स विल बी इलेक्टेड बाय व्हाट यू कॉल दीज पंचायत समितिज एंड म्यूनसिपल मेंबर्स. मतलब सिटी वाला एरिया है या गांव वाला एरिया है, कुछ मेंबर्स विल बी इलेक्टेड, सम मेंबर्स, सम क्लास ऑफ मेंबर्स 1/6, 1/12, 1/3 ऐसे कर करके. ठीक है, और जो पेंडिंग जो बाद में बच जाते हैं दैट रिमेनिंग मेंबर विल बी nominated by governor. So number is not fixed, so this is also, so only second and third statement happens to be correct, and hence C is going to be the right answer. Consider the following statement about minority rights. 3 statement has been given और हमें correct statement बताना है. The term minority is not defined in the constitution, so that is करेक्ट. माइनॉरिटी को है कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया. आर्टिकल 29 and 30 आर द ओनली प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन where minorities are discussed, so that is incorrect. Article 29 extends to any section of society, while Article 30 is confined only to religious and linguistic minority, so that is also correct. So first and third happens to be correct, first and third, and hence D is going to be the right statement. Eternal Blue was recently in news. What is it? करंट अफेयर कॉन्टेम्प्रेरी क्वेश्चन है आपका. इटर्नल ब्लू एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी थी दैट वाज डिटेक्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोग मोस्टली यूज लाइनक्स वगैरह भी यूज़ करते हो, बट मोस्टली विंडोज़ का विंडोज़ यूज़ करते हो, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 9 और वट विंडोज़ 8 यू वुड बी यूजिंग. सो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी अभी आई थी. ठीक है, इस माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसे इटर्नल ब्लू का नाम दिया गया था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 3 स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन and we have to tell the correct statement. The President addresses both House of the Parliament at the commencement of the first session each year and informs the Parliament of the causes of its summons. That's correct. The President has right to address either House of the Parliament at any given time. That is also correct. The President has power of appointing Indian representative to other countries and receiving diplomatic representative of other state is recognized by the Parliament. So this is talking actually about ambassadors, councillors, diplomatic persons. ठीक है, तो उनके बारे में. So all 3 statement happens to be correct. So D is the right answer. Consider the following statement with respect to education. Article 21 under fundamental rights specifies age group between 6 to 14 years for the education, so that is correct, because in this age the free elementary education has to be given and that has been made fundamental right for this age group, so that is correct. Article 45 of DPSP here it should be DPSP specifies the age group between 0 to 6 years, so that is also correct. It becomes a duty of the state under the article 45 to take care of early childhood of the children below 6 years and their lactating mothers as well, और इसीलिए ICDS वगैरह जो स्कीम्स है वो चलाई जाती है. आर्टिकल 51A ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज स्पेसिफाइज द ग्रुप बिटवीन 6 to 14 ईयर्स. अब ये आपको कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है, बट एक्चुअली दिस इज अ राइट स्टेटमेंट. इट इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, सो इट बिकम्स अंडर फंडामेंटल राइट 51A by 86 constitutional amendment. Constitution has ensured or fundamental duties has been ensured for the parents of those child who lies between this group. ठीक है, और उनको स्कूल भेजना ये उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है और ये जो है वो डिफाइंड है.
ठीक है, सो दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट पूछा है, सो 1 2 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट. बी इज द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. ओके, दे आर एप्लीकेबल टू अटॉर्नी जनरल बट नॉट टू द प्रेसिडेंट. सो दैट इज सरप्राइजिंगली दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि प्रेसिडेंट जो है उनको तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑलरेडी उनके बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं. ठीक है, क्रिमिनल सिविल बहुत सारे केसेस में ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस पड़े हुए हैं. तो उनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अटॉर्नी जनरल, उनकी आवश्यकता जो है वो नहीं है. द प्रिविलेजेस कमेटी हैंडल द केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. सो दैट इज आल्सो करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. बोथ 1 and 2 इज गोइंग टू बी करेक्ट स्टेटमेंट. कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्टली मैच. सो एडजॉर्नमेंट कौन इशू करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्स. एडजॉर्नमेंट signed by, will it be issued by president? No, it will also be issued. This is also a right that belongs to speaker or chairperson of that house. So that is incorrect. Dissolution of the house, that is Lok Sabha, will be of course done by the president and not by the. So 1 and 3 is going to be the correct answer. That is correctly matched. Hence D is the right answer. Consider the following statement about Council of Minister. Council of Minister is collectively responsible to the Parliament. No, the Council of Minister is collectively responsible to the lower house, that is Lok Sabha, and not to the whole of Parliament. बट इट डज नॉट मीन कि राज्यसभा के अगर मेंबर्स के कुछ सवाल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका रिस्पांस नहीं देंगे. उनका रिस्पांस ऑफ कोर्स देंगे, बट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई जब तक उनके पास मेजोरिटी है, राइट, दे विल कंटिन्यू टू एंजॉय और कंटिन्यू टू बी इन द गवर्नमेंट. ठीक है, काउंसिल, बिकॉज गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन होता है वो लोकसभा की स्ट्रेंथ के ऊपर ही होता है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सो दैट इज ऑल्सो incorrect statement. The Council of Minister holds office during the pleasure of President and not the Prime Minister. Right? Correct statement बताना है. None happens to be the correct statement. D is the right. Consider the following statement regarding Article 20. It prohibits the state from enacting any type of ex post facto legislation. So आप लोगों को पता होगा कि yes, ex post facto legislation के बारे में बात करता है Article 20, but what it talks about ex post facto. I hope what is this ex post facto legislation you would be aware if you have read the fundamental right and more specifically अगर article 20 पढ़ा है तो ex post facto legislation के लिए article 20 मना करता है, but not for any type, only in cases of criminal cases. In civil cases parliament does have every right to bring any ex post facto law. It protects a person against self incrimination. So that is correct. We have to tell the correct statement. Hence 2 only is going to be the correct statement. Consider the following statement about the veto powers of the president. President enjoys the absolute veto on bill, but it is not discretionary power. So that is correct. President का जो absolute veto, Indian president का जो absolute veto का power है वो अपने आप exercise नहीं करते. It is only on the advice of Council of Minister. ठीक है, pocket veto is a discretionary power and it is mentioned into the constitution. So फर्स्ट सेगमेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट है कि पॉकेट वीटो ऑफ कोर्स इज अ डिस्क्रिशनरी पावर. ठीक है, इसमें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस नहीं लेते हैं, बट इट इज नॉट मेंशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट. सस्पेंसिव वीटो इज नॉट एप्लीकेबल टू द मनी बिल. सो दैट इज आल्सो करेक्ट. मनी बिल में आप पॉकेट वीटो का इस्तेमाल प्रेसिडेंट जो है कर सकते हैं, वो रख सकते हैं, बट वो रिटर्न नहीं कर सकते, है ना, फॉर द रिकंसिडरेशन. सो दैट इज आल्सो करेक्ट. सो फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, first and third, and hence C is going to be the right answer. So with this we are wrapping up this session. We'll meet you into the next session. Till then, bye bye.